सुना जाउची ओके चलो चलो फर्स्ट क्वेश्चन the Protection of Civil Rights Act 1955 and Scheduled Caste and Scheduled Tribe, the Prevention of Atrocities Act 1989 have been enacted to protect. अच्छा ये जो Protection Civil Rights Act 1955 हो कि Scheduled Caste और Scheduled Tribe Act 1989 हो ठीक अछि सो एमाने एटा को कहा को माने प्रोटेक्ट करा पे कहा को प्रोटेक्ट करा पे तयारी करा जायथला बोली पचरा जाय शेड्यूल ट्राइब फ्रॉम सोशल इनजस्टिस एंड एक्सप्लॉयटेशंस सोशल इनजस्टिस एंड एक्सप्लॉयटेशन कहले कोन शोषण विरोध अधिकार ठीक अछि शेड्यूल ट्राइब हो कि शेड्यूल कास्ट हो दीटा जाक माने कौन एम जो विरोध में जोटा शोषण करा कौटी माने से ठीक से देखा ठीक अच्छे जस्टिस सबुआड़े इक्वल रखा रिजर्वेशन रखा सब किसी जिनस को माने कौन प्रोवाइड करने ए एक्ट को तैयारी करा जायतिला शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एक्ट 1989 एंड द सिविल राइट एक्ट 1955 ओके both A और B है correct answer. The fundamental duties in the Indian constitutions are inspired by. तो fundamental duties को हमें कहाँ टरू आंचे Australian constitution to ना British ना constitutions of USSR ना Canadian constitution. So fundamental right fundamental duties. So fundamental rights टा हमें कहाँ टरू आंचे US रू आंचे right. Fundamental rights है हमें आंचे US रू. So fundamental duties टा को हमें कहाँ टरू आंचे ना USSR very good Russia United States of Soviet Rus जोटा एबे को रशिया जोटा पार्टीशन हो जाइए सेतबेले USSR थिला ठीक अछि सो USSR रु आमे आनी छे कोन फंडामेंटल ड्यूटीज आ फंडामेंटल राइट्स स्टैंड छे USA रु The inclusion of a separate chapter on fundamental duties in the constitution was recommended by अच्छा आमे जो fundamental duties टा partition कोद रे करा जाइछि DPSP रे करा जाइछि ओके DPSP रे 51 clause A रे हमको fundamental duties टा को दिया जाइछि राइट fundamental duties को एथरे दिया जाइछि तो कोड गोटे पार्टीशन करा जाइछि ना कोद रे DPSP रे गोटे पार्टीशन करा जाइछि सो एटा को कोद रे दिया जाइथिला माने को कमिटी ताको रेकमेंड करथिला जे एटा को आनिबा पई सरदार सोरण सिंह कमिटी रामनंदन कमिटी मंडल कमिटी नन ऑफ द अबव सो कोडा है जिवो सरदार सोरण सिंह कमिटी वेरी गुड सरदार सोरण सिंह कमिटी जोटा को 1976 अनुसार 1976 में कोडा कहले को अमेंडमेंट एक्ट की कहि परिबो 1976 को अमेंडमेंट एक्ट 42nd 44th को अमेंडमेंट एक्ट 1976 42nd वेरी गुड 42nd जो एटा कोन 1976 42nd अमेंडमेंट एक्ट करा जायतिला सो एटा को फंडामेंटल ड्यूटीज हम देखिबा कहार रिकमेंडेशन करा था सरदार सोरण सिंह कमिटी अनुसार ठीक अछि कोउतरे अछि फंडामेंटल ड्यूटीज डीपीएसपी रे केते आर्टिकल 51A बुझियला नेक्स्ट द पार्ट एक्स बी ट्रिपल आई ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद व्हाट एक्स बी ट्रिपल आई मींस व्हाट 18 पार्ट 18 पत पछ पार्ट 18 पार्ट 18 कौन अच्छे डायरेक्टरी प्रिंसिपल्स फंडामेंटल ड्यूटीज फंडामेंटल राइट्स या इमरजेंसी प्रोविजंस कोडा है बताले कोडा है जीवो डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अछि के पार्ट 4 रे अछि राइट पार्ट 4 फंडामेंटल ड्यूटीज एंड फंडामेंटल राइट्स होछि पार्ट 3 ओके एंड फंडामेंटल ड्यूटीज आल्सो पार्ट 4A सो आमे जो देखिबा इमरजेंसी पावर्स एते सब रहला बे इमरजेंसी प्रोविजंस हमर रहिला जेते 352 354 एंड 360 राइट एमान सब रहिले कोन इमरजेंसी प्रोविजन केते आर्टिकल रहला पार्ट 18 और द एक्स वी ट्रिपल आई ओके ठीक है जी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आज एंश्रीन इन आर्टिकल 25 टू 28 इंक्लूड्स व्हाट फ्रीडम ऑफ कंसाइंस फ्रीडम ऑफ प्रोफेशंस by free professions practice and propagations of religions या all of the above so freedom
फ्रीडम ऑफ रिलीजन कहले कहले कौन धर्मगत सांस्कृतिक अधिकार जोड़ा को आम कहे धर्मगत अधिकार जोड़ा कहे ठीक अच्छे प्रत्येक जेकोसी धर्म हो आम इंडिया रे कौन आम स्टेट रे जेकोसी धर्म को समस्ते कौन करेंगे फ्री प्रैक्टिस करेंगे तापर कौन तार मध्य प्रोपागेशन करेंगे जोटा को माने कौन तार प्रमोशंस करेंगे ठीक अच्छे जेकोसी प्रोफेशन्स हो ताकू समस्ते कौन करेंगे लीगली से कौन जोटा प्रैक्टिस करेंगे ठीक अच्छे किसी भी हो माना कि मु केवल मास्टर्स डिग्री करें माने केवल मु गोटे लाइन रे जीवी ही प्रोफेसर लाइन रे जीवी कि पीएचडी करी किसी भी गोटे हो पारि सेमती किसी ना अदर मु लॉ भी प्रैक्टिस करी सहित मु बैंकिंग लाइन रे भी जापरि एमती गवर्नमेंट ना जे केवल गोटे लाइन में जापरि ना फ्री प्रोफेशन्स हो पार फ्रीडम ऑफ कंसाइंस हो पार सहित प्रैक्टिस हो पार कि जेकोसी रिलीजन सो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर राइट ओके the right to move from Supreme Court for the enforcement of fundamental rights including the writs of habeas corpus, mandamus, prohibitions, certiorari and quo warranto are the parts of what एवं सब जो पांचटा जाक रिट आम रही मैंने कहार पार्ट अटंती फंडामेंटल राइट्स रो न राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज या डीपीएसपी या राइट टू फ्रीडम सो मैंने कहार माने पार्टीशन माने कहार पार्ट सब अटंती कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज राइट आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को आम जो देखा आर्टिकल 32 रे एटा रही एंड जदि आम हाई कोर्ट को देखा आर्टिकल 226 ओके तो एको कहते कौन कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज द राइट टू acquire hold and dispose of the property was deleted from the chapter of the fundamental right अच्छा एटा क्वेश्चन पढ़ी एएसओ एग्जाम रे ठीक अच्छे सो को आर्टिकल सॉरी को अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अनुसार जो राइट टू प्रॉपर्टी आमर अच्छे से हटई दि जाता डिलीटेड करा राइट टू प्रॉपर्टी आम फंडामेंटल राइट रू ताकू कटई दि जाता काटी दि जाता को आर्टिकल अनुसार आर्टिकल 40 सॉरी ओके सो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अनुसार चेंज कराला कौन था राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 19 रे थिला ठीक अछि ताकू चेंज करा जाय कि कोदरे 300 ताकू रखागला आर्टिकल 300 ताकू रखागला ठीक अछि आर्टिकल 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट सॉरी सीए जोटा 44th कॉन्स्टिट्यूशन 1978 ठीक अछि व्हिच आर्टिकल ग्रांट्स प्रोटेक्शन टू पर्सन्स हु आर अरेस्टेड और डिटेन्ड अच्छा अरेस्ट और डिटेन करने जोटा दि जाए कौ आर्टिकल अनुसार दि जाए कौ आर्टिकल अनुसार दि जाए अरेस्ट हो कि डिटेन कर हो सी निज को प्रोटेक्ट कर मान कौ आर्टिकल अनुसार से करेंगे 23, 24, 25 एंड 22 आर्टिकल 22 वेरी गुड आर्टिकल 22 है ग्रांट प्रोटेक्शन पर्सन हु आर अरेस्टेड और डिटेन करा जाय परिबा ताकू दिया जाय परिबो आर्टिकल 22 अनुसार ठीक अछि द आर्टिकल 40 व्हिच रिक्वायर द स्टेट टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड अथॉरिटी टू एनेबल देम टू फंक्शंस एज यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इज पार्ट ऑफ अच्छा विलेज पंचायत हो कि सेल्फ गवर्नमेंट बा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहाँ अंडर आसे बोली क्वेश्चन देछि डीपीएसपी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज फ्रीडम ऑफ कंसाइंस और नॉन ऑफ दिस अबव ताले कोथरा आसीबो डीपीएसपी आसीबो वेरी गुड आर्टिकल विलेज पंचायत आर्टिकल केते 40 राइट विलेज पंचायत विलेज पंचायत आर्टिकल केते 40 रे आसीबो The law which aims to protecting the monuments, places and objects of national importance is Save and Protect Monument Act, Protection Remain Act, the Ancient and Historical Monument and Archaeological Site and Remain Act or none of these above. So कोदरे एजिबा ए जो हमर अछि डीपीएसपी रे दो देइछि जे मोनुमेंट हो कि प्लेसेस हो ओके ए सब जिंस रा को प्रोटेक्ट करबा पई जो आर्टिकल रहिछि एटा को माने को एक्ट अनुसार याको दिया जायथला को एक्ट अनुसार द एंशिएंट एंड हिस्टोरिकल मोनुमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट रिमेन एक्ट्स ए एक्ट अनुसार दिया जायथला जे प्रोटेक्शन केमति करि परबा आर्टिकल 49 वेरी गुड
The cabinet is the nucleus power in panchayat raj, parliamentary systems, patriarchy or anarchy. कोटा है कैबिनेट सिस्टम टा कहबा गले कोतरे थाए पार्लियामेंट्री सिस्टम रे वेरी गुड कैबिनेट टा कोतरे रहबा कैबिनेट इज द न्यूक्लियस पावर ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम्स ओके एटा को के कहिथिले आइवर जेनिंग्स कहिथिले आइवर जेनिंग्स ए वर्ड टा को यूज करथिले दैट की इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम कैबिनेट इज द न्यूक्लियस ऑफ ए पावर. The foremost basic features of the constitutions of India includes the basic feature टा कौन conclude करे बा include करे supremacy of the constitutions, independence of the judiciary, rule of law, principle and equality, judicial review and secularism. सर कौन है जीवा इनक्लूड कौन करे सब किसी जिनस बेसिक फीचर्स रे हमें जहाँ भी किसी देखिए सब जिनस रहिबो सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस हो किंबा जुडिशियरी इंडिपेंडेंट आमे तो जानी छे ठीक अछि ता सह जदी आर्टिकल 50 जुडिशियरी सेपरेशन फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव जो आर्टिकल 50 रूल ऑफ लॉ हो प्रिंसिपल इक्वालिटी हो जुडिशियल रिव्यू सेक्युलरिज्म सब जिनस प्रिएम्बल लिखाई के अछि तो बेसिक स्ट्रक्चर हमें सेटा कहबा सो ऑल ऑफ द अबव होइजबा करेक्ट आंसर. President of India can be re-elected for any number of terms, 2 terms, 3 terms या 5 terms. तो president केते थर पई re-elect हे परिबे any numbers पई ओके any number of term पई से elected हे पारे सेमिति नाही जे particular 2 terms नाही कि 3 terms नाही कि 5 terms नाही जे एमिति particular जिंस पई सो से माने कोन हे परिबे जे कोनसी term पई मध्ये हो no limit ओके तो कॉन्स्टिट्यूशन ने सेमिति किछि लिमिटेड जिंस लिखाई नाही. सो आमे जे देखिबा इलेक्शन प्रोसेस इलेक्शन मैनर प्रेसिडेंट को आर्टिकल केते इलेक्शन केते को देन इलेक्शन मैनर केते को इलेक्शन मैनर कहले कोन माने तांकर इलेक्शन टा केन जो एमएलए माने देबे वोटिंग देबे केते परसेंटेज देबे केते 1/4 देबे 1/3 जो सब तांकर सब कैटेगरीज थाए ताको हमें मैनर बोली कहबा ठीक अछि. सो आर्टिकल इलेक्शन होची आर्टिकल 56 ओथ होची 60 वेरी गुड इलेक्शन केते इलेक्शन 50 पर इलेक्शन मैनर होची 55 बुझिला ओके एंड प्रेसिडेंट को आर्टिकल जदि हमें देखिबा खाली प्रेसिडेंट देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट इन अ स्टेट आर्टिकल होची 52 ओके एंड 61 होची तांकर इम्पीचमेंट 60 होची तांकर ओथ एंड अफर्मेशन से भी रहइबो ता सहित आ कोन रहिला 72 pardoning power very good. Okay, chalo jiva next question. In 1987 3 new states of Mizoram, Arunachal Pradesh, Goa came into begins. अच्छा एटा जो अछि 1987 रे तीनटा स्टेट को नुआ तैयारी करा जायतिला मिजोराम अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा ओके सो माने को स्टेट हिसाब रे माने केते तम नंबर स्टेट हिसाब रे अंकु फॉर्मेशन करा जायता 24 25 26 17 18 19 23rd 24 25th 25th 25 26 27 को आंसर तैयारी करा जायतिला मानंकु मन रखिबा मिजोराम अरुणाचल प्रदेश आ गोवा मिजोराम को 23rd इंडियन यूनियन हिसाब रे ता सहित 24 हो अरुणाचल प्रदेश एंड 25th हो कोन गोवा ओके स्टेट हिसाब रे 25 स्टेट हिसाब रे केते 1987 मसिया भितरे मानंकु फॉर्मेशन करा जायतिला ठीक अछि. The Citizen Act 1955 prescribes the way of losing citizenship acquired under the act prior to it under the constitution's wise deprivations, renunciations, terminations, yeah, all of the above.
को एक्ट अनुसार कराइला तीनटा जाक ठीक अछि डिप्राइवेशन हो रिनउंसिएशन हो एंड टर्मिनेशंस हो ऑल ऑफ द अबव हो जिवो ठीक अछि सिटीजनशिप लूजिंग केमती करबा सो ये अनुसार तीनटा को अनुसार ए तीनटा को बेसिस रे ही करा जायथला द कॉन्स्टिट्यूशंस प्रोवाइड्स prohibitions of traffic in human beings human trafficking जो जिनस रहला एंड फोर्स लेबर को आर्टिकल केते 23 43 33 एंड 231 23 वेरी गुड आर्टिकल 23 अनुसार जोटा आम कौन कहे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन शोषण विरोध अधिकार जोटा रोज ठीक अच्छे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन से अनुसार ही करा जाए माने एटा कोन आर्टिकल 23 रे दिया जाय छै प्रोहिबिट करबा पई ह्यूमन ट्रैफिकिंग विषय द कमिटी व्हिच वाज अपॉइंटेड टू आइडेंटिफाई द क्रीमी लेयर अमंग द ओबीसीज ओबीसी मानकर दीटा लेयर थाए गोटे होची क्रीमी आ गोटे होची नॉन क्रीमी लेयर सो क्रीमी लेयर कहले कोन जो मानकर आय वर्ष को मिनिमम 5 लाख 8 लाख तलू को जोटा रोचे ठीक अच्छे अंडर 8 लाख भितर रोचे से क्रीमी लेयर कह जाता नॉन क्रीमी लेयर कहले जो मानकर 8 लाख या 5 लाख एबव जोटा लगे ठीक अच्छे नॉन क्रीमी लेयर कह जाए सो आम जो देखा ये जो कमिटी जो क्रीमी लेयर हो नॉन क्रीमी लेयर जो ओबीसी जो कमिटी बसी ओबीसी को कमिटी एम के लोधा कमिटी सदा स्वर्ण सिंह कमिटी रामनंदन कमिटी या नन ऑफ दिस सब आंसर हो कौन रामनंदन कमिटी ठीक अच्छे रामनंदन कमिटी केबे करथिला 1993 रे 1993 रे देखा ओबीसीज रो जो क्रीमी लेयर हो कि नॉन क्रीमी लेयर हो ये जो प्रथम थर पई जदी इंट्रोड्यूस करा जायतिला प्रथम थर पई इंट्रोड्यूस करा जायतिला 1971 रे ठीक अछि सनातन कमिशन प्रथम एटा को ओबीसीज वर्ड को प्रथम थर पई यूज करथिले बट पारे रामनंदन कमिटी के द्वारा 1993 रे तापर एटा क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर को पुणी थरे एटा को आउ थरे रीओपन करा जायतिला आर्टिकल 17 abolishes what untouchability discriminations equality or titles अनटचेबिलिटी हे जबो आर्टिकल 17 हे जबो कोन अनटचेबिलिटी अस्पृश्य बा अछुआ भेदभाव जोटा को करा जेते आर्टिकल 17 रे ताको अबलिश करा जे द सुपरशंस ऑफ इमोरल ट्रैफिक इन वुमेन एंड गर्ल एक्ट वाज पास्ड अच्छा जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग जोटा हमर वुमेन और गर्ल्स मान को ऊपर जोटा को करा जेते ठीक अछि सो ए एक्ट को केबे पास करा जेतला 50 58 56 एंड 62 केबे करा जेतला 1956 रे ओके 1956 रे एक्ट को पास करा जायतला Dr. B.R. Ambedkar described DPSP of state policy as heart of the constitutions, novel feature of the constitutions, conscience of the constitutions or backbone of the constitutions. So को हिसाब रे एटा को माने describe करिसेंती डॉक्टर B.R. Ambedkar कोडरे novel feature of the constitution ठीक अछि novel feature of the constitution हिसाब रे DPSP को से कोन करिसेंती describe करिसेंती ओके द अनलॉफुल एक्टिविटीज और प्रिवेंशन एक्ट ठीक अच्छे एटा केबे पास करा जायतला प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट जोटा को कहा जायते प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट केबे करा जायतला 1968 70 69 एंड 67 केबे करा जायतला 1967 रे ओके 1967 रे एटा को पास करा जायतला कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स सांस्कृतिक और शिक्षागत अधिकार कते आर्टिकल आर्टिकल 15 आर्टिकल 29 39 आर्टिकल 18 और आर्टिकल 14 केते आर्टिकल रे आसीबो आर्टिकल कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स केते रे आसीबो आर्टिकल 29 रु 30 ओके आर्टिकल 29 रु 30 व्हिच आर्टिकल डिक्लेयर
that a constitutional amendment is not a law and hence cannot be challenged. को आर्टिकल टा कॉन्स्टिट्यूशन बारे करो गोटे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बट नॉट लॉ एंड इट कांट बी चैलेंज्ड ଆଉ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ କୋଉଟା ହେଇପାରିବ ଆର୍ଟିକଲ 13 14 15 and 16 କୋଉ ଆର୍ଟିକଲ ତାହେଲେ आर्टिकल 13 आर्टिकल 13 okay the most important law enforcing article 24 that prohibiting the employment of children below the age of 14 years in a factory or hazardous activities अच्छा जो फैक्ट्रीज मानकर हो किंबा कोटी मानकर छोट पिला को 14 वर्ष रु कम पिला को काम करने जोटा को बैन करा जाए प्रोहिबिट करा जाए थे आर्टिकल 24 रे सो एटा को आर्टिकल अनुसार सॉरी को एक्ट अनुसार दिया जाता चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 अनलॉफुल एक्टिविटीज 1967 लीगल सर्विस अथॉरिटीज प्रिवेंशन ऑफ atrocities एक्ट 1988 सो चाइल्ड लेबर एक्ट बा प्रोहिबिशंस एंड रेगुलेशंस एक्ट जो चाइल्ड लेबर मानक बा शिशु श्रमिक जोड़ा को कहा जाए था ठीक अच्छे 1986 एक्ट अनुसार यहाँ को प्रोहिबिट करा जाइथिला The Constitution of India has divided the power between the center and the state in term of concurrent list, state list, union list, state list, concurrent list or union list. So कौन है जब आंसर स्टेट आउ सेंटर भितर जोड़ा कौन पावर को डिवाइड करा जाइए सो कौन है बताला सेटा द यूनियन स्टेट यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट एंड कनकरेंट लिस्ट ठीक अच्छे तीनटा जगह which constitution amendment act facilitates the appointment of the same person as governor for two or more states governor को गोटे स्टेट रो गवर्नर को either more to either आउ गोटे स्टेट हो कि आउ दीटा स्टेट पई हो गवर्नर हिसाब रे मध्य तांको अपॉइंट करा जाई पारिबो सो को अमेंडमेंट एक्ट एटा को कहा जायतला फर्स्ट 7th 15th और 4th कोडा 7th constitution amendment act very good 1956 7th constitution amendment act अनुसार एटा को कहा जायथिला ओके which article of the constitution empower the high court to issue the writs हाई कोर्ट को जो आर्टिकल दिया जाइए रिट इश्यू करने 226 27 28 एंड 29 को आर्टिकल अनुसार हाई कोर्ट को दिया जाइए 226 वेरी गुड 226 आर्टिकल दिया जाइए हाई कोर्ट को रिट इश्यू करने आ सुप्रीम कोर्ट को 32 टू बी एलिजिबल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ प्रेसिडेंट पर्सन शुड हैव कंप्लीटेड वाइस प्रेसिडेंट हवाई गोटे पर्सन को केते वर्ष हवा दरकार 35 very good 35 years हवा दरकार right 35 years minimum age हवा दरकार the pardoning power of the president in India enshrined in the article 72 of the constitution of India अच्छा तो आर्टिकल जो पार्डनिंग पावर हमर अछि प्रेसिडेंट कर सेटा को हिसाब रे अछि रेमिशंस रेस्पाइट एंड रिप्राइव पार्डन कम्यूटेशंस पार्डन कम्यूटेशन रेमिशन रेस्पाइट रिप्राइव और कम्यूटेशन सो को अनुसार सब तक सी जो ठीक अछि पार्डनिंग अछि कम्यूटेशंस अछि रेमिशंस अछि रेस्पाइट अछि रिप्राइव अछि सब तक होई परबो ठीक अछि पार्डनिंग पावर से जेमिति प्रकार चाहिबे सेमिति प्रकार करि परिबे राजक्षमा जोडा दिया जायते under which article of the constitution does the governor of the state अच्छा pardoning power जोड़ा हम प्रेसिडेंट का पाखे रहला 71 सॉरी 72 होची प्रेसिडेंट कर pardoning power सेमती गवर्नर कर pardoning power टा कोते 161 62 63 164 161 very good 161 होची गवर्नर कर pardoning power article the president of constitution assembly of the India constitutional assembly ro president किए थिले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जवाहरलाल नेहरू सचिदानंद सिन्हा आउ हकीम अजमल खान
किए थिले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वेरी गुड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थिले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो प्रेसिडेंट द कांसेप्ट ऑफ अ प्रोसीजर एस्टैब्लिश by law as incorporated in the constitutions of India is borrowed from acha establish of the law as incorporated in the constitution procedure to establish by law एटा को आमे को constitution रो आनिचे बोली पचाच ए आयरिश अमेरिकन इंग्लिश और जापानीज को कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश ना जापान कॉन्स्टिट्यूशन वांचा में कोडा जापान जापान कॉन्स्टिट्यूशन वांचा ठीक अछि in which rule of the constitutions India divisions power between the union and the state अच्छा को शेड्यूल अनुसार जो पावर को डिवाइड करे जाय यूनियन और स्टेट भितरे ठीक अछि को शेड्यूल एटा को मेंशन अछि 5th 6th 7th एंड 4th केते केते माने को शेड्यूल अछि 7th शेड्यूल वेरी गुड 7th शेड्यूल रे मेंशन अछि दैट की पावर हैज बीन divided between the union and the states in which case did the Supreme Court hold that the preamble is not a part of the constitution को केस रे कहा जायतला कि सुप्रीम कोर्ट ठीक अछि माने को केस सुप्रीम कोर्ट कहतला जे प्रियम्बल टा गोटे कॉन्स्टिट्यूशन गोटे पार्ट नुह बोली कोउतरे बेरुबारी केस गोलकनाथ केस केशवानंद भारती केस कोउतरे केशवानंद भारती केस रे कहा जायतला ना फास्ट हेतिला बेरुबारी केस 1960 रे बेरुबारी केस हेतिला केशवानंद भारती केस 1973 फास्ट थरक 1960 रे बा बेरुबारी केस रे सेतरे मना करा जायतिला जे प्रियम्बल टा कॉन्स्टिट्यूशन गोटे पार्ट नुह बोली बट केशवानंद भारती केस रे एटा को ऐड करा गला दैट की प्रियम्बल टा होची गोटे कॉन्स्टिट्यूशन रो पार्ट ठीक है जेटा मना कर 60 और 73 प्रथम मना करा जायतिला तापर कहा जायतिला सो आंसर हो जिवो बेरुबारी केस ओके आंसर हो जिवो कोन बेरुबारी केस under which article in the right to freedom of the conscience and free professions practice and propagations of religion mentioned in what article 24 25 26 and 27 ओ आर्टिकल अनुसार फ्री प्रोफेशंस प्रैक्टिस करि परिबे रिलीजन एटा कहली आर्टिकल केते हे जिवो 25 वेरी गुड the duties of the chief minister with regard the furnishing of information to governor and provide अच्छा आमर जेमते आर्टिकल अछि आर्टिकल 75 रे कोन प्राइम मिनिस्टर कोन करिवे प्रेसिडेंट को तांको जहा भी सब एडवाइस थिबो सब देई परिबे ठीक अछि बा प्रेसिडेंट एडवाइस नै परिबे काउंसिल मिनिस्टर हो प्राइम मिनिस्टर मा पाकर हो नै परिबे सेंती गवर्नर को जो देई परिबे कोन चीफ मिनिस्टर जो माने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे बा किछि भी सजेस्ट करबा पई हो सो आर्टिकल केते आर्टिकल ले सेरा को करि परिबे बोले देई आंसर आर्टिकल 166 आर्टिकल 167 ठीक अछि आर्टिकल 167 अनुसार जहाँ भी किसी इनफॉरमेशन हो किसी दरकार जिनस हो काठू नहीं पारे गवर्नर चीफ मिनिस्टर टू नहीं पारे ठीक अच्छे आर्टिकल 167 पार्ट डबल एक्स मीन्स पार्ट 20 of the constitutions of India covered by article 368 that mentions temporary, transitional and special provisions, amendment of the constitutions, elections या official language कोड दिया जायछि तल 368 मेंशन करै छै कोन अमेंडमेंट एक्ट वेरी गुड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हो कि अमेंडमेंट एक्ट हो किछि भी ओके तो इधर दिया जायछि 368 रे मेंशन करा जायछि सो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ भी किछि अमेंडमेंट करा जाय concurrent list of freedom of trade commerce and joint sitting of the two houses of the parliament are the provision that mention of the constitutions they have been borrowed from अच्छा concurrent list हो किंबा पार्लियामेंट रो दीटा हाउस भितर जॉइंट सिटिंग हो ए सब जिंस हमें काट रो आनचे ऑस्ट्रेलिया अमेरिका एरिस एंड जापान सो काट रो में आनचे को कॉन्स्टिट्यूशन ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन वेरी गुड जॉइंट सिटिंग ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन और कंकरेंट लिस्ट मध्य ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन रो हमें बोरो करिचे
The state does not have a loyalty to any particular religion as such. It is not irreligious or anti-religious. It gives equal freedom to all religions. The definitions as given by P.B. Gajendra Gadkar, former Chief Justice of Indian of the sovereignty, socialism, democracy. अच्छा ये जो टोटल दिया जाए जो डेफिनेशन दिया जाए गोटे स्टेटमेंट दिया जाए स्टेटमेंट एक्जाक्टली कौ जिनस दिया जाए सॉवरेंटी ना सोशलिज्म ना डेमोक्रेसी ना सेक्युलरिज्म आंसर कौन सेक्युलरिज्म दिया जाए ठीक अच्छे The right to equal opportunity for all citizens in matter of public employment has been तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मान कह जहाँ भी किसी अपॉर्चुनिटी रहा समस्त को इक्वल अपॉर्चुनिटी देवाई सिटीजन मान को इक्वल अपॉर्चुनिटी दि जावाई कहुई सो कौ आर्टिकल दि जाए कौ आर्टिकल आर्टिकल 16 वेरी गुड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू सिटीजन्स इन न मैटर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मान हो कौन आर्टिकल 16 रे दिया जाइए कौन जो अपॉर्चुनिटी दिया जाइए ओके इक्वल अपॉर्चुनिटी द प्रोविजन ऑफ सस्पेंशंस ऑफ फंडामेंटल राइट इज बोरोड फ्रॉम अच्छा फंडामेंटल राइट कौट आम आने वेमार कन्स्टिट्यूशंस जर्मनी जोटा कौचे आम ऑस्ट्रेलिया अमेरिका कनाडा वेमार कन्स्टिट्यूशंस वेरी गुड वेमार कन्स्टिट्यूशंस प्रोविजन सस्पेंशंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स कोटा सस्पेंड हे पारिबो को फंडामेंटल राइट फंडामेंटल राइट्स आम यूएसए रू आनी सस्पेंशंस ऑफ फंडामेंटल राइट कहले को फंडामेंटल राइट इमरजेंसी टाइम रे हे पारिबो कोटा हे पारिबोनी जो जिनस रहिला प्रोविजंस रहिला से सब जिनस आम वेमार कन्स्टिट्यूशंस जर्मनी रू आनी ठीक अछि As per the preamble of the constitutions of India, the nature of Indian states is sovereignty, socialist, republic. या सब तक देजी sovereignty, socialist, secular, democratic and republic. So कौन है जीवा Indian state रो nature main कथा कौन कर ले पांचटा जगह है जीवा नहीं sovereignty, socialist, secular, democratic and republic जोड़ो का मोरा preamble ले mention है कि अच्छी बुझिला The Indian National Congress adopted a resolution to establish a socialistic pattern of sovereignty society in अच्छा INC गोटे रिजोल्यूशन अडॉप्ट करिथिला ठीक अछि केबे माने जोडा कोन सोशलिस्ट पैटर्न सोसाइटी सोशलिस्ट पैटर्न अनुसार कोन तयारी करबा पई को सेशन करता अवाडी सेशंस 1955 बॉम्बे सेशन 1953 कलकत्ता सेशन 1957 और नागपुर सेशन 1959 मन रखी था अवाड़ी रिजोल्यूशन जोटा को कहा जाता है अवाड़ी सेशन जोटा को कहा जाता है ओके तो यहाँ कौन है नेशनल कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस से कौन सोशलिस्ट पैटर्न रे गोटे डेवलपमेंट तैयारी करने से गोटे गोल थिला जे सोशलिस्ट पैटर्न गोटे सोसाइटी तैयारी करने यहाँ को यही सेशन मान को अडॉप्ट करते ठीक अच्छे 1955 the three words which were added in the preamble the constitutions of India by the 42nd amendment act 19 अच्छा 1976 मसीहा जो 42nd amendment हेतला preamble ले तीनटा वर्ड को नुआ करी कौन करागला जोड़ा गला बा ऐड करागला से तीनटा को वर्ड कौन थिला सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर सॉवरेन रिपब्लिक डेमोक्रेटिक या सॉवरेन सेक्युलर रिपब्लिक सो कौन है जीव इंटीग्रिटी सोशलिस्ट एंड सेक्युलर ए तीनटा जाक वर्ड को पर कौन गला 42तम अमेंडमेंट एक्ट 1976 मसीह ऐड करा जायतिला प्रियम्बल ओके आर्टिकल 1 डिस्क्राइब इंडिया इज अ भारत इंडिया दैट इज अ भारत as union of the states federal state with unitary features united states with federal features या federal states कौन है जी बताले यूनियन ऑफ द स्टेट आम तो फेडरल स्टेट प्योरली नो क्वासी फेडरल आम कहबा सो आम जदि यूनियन माने भारत को देखिबा भारत दैट इज इंडिया दैट इज भारत as union of the state in order to put a check on terrorist activities in India terrorist and disruptive activities prevention act टाडा जोटा को आम कहचे टाडा एक्ट को केबे पास करा जायतिला टेररिस्ट अटैक को जो सब चेक करबा पई हो किबा ताको देखा रखा करबा पई हो
एटा को केबे पास करा जायथिला एक्ट को 1995 1985 रे ओके 1985 रे टाडा एक्ट को पास करा जायथिला 1985 मसिया रे which provisions made in the constitutions of India is the bedrock of the democratic systems in country the bedrock of the democratic systems in the country कोडा तले हिजबो DPSP fundamental rights and fundamental duties कोडा हिजबो fundamental rights हला fundamental rights about which feature of the constitutions is said that it is a check on a bank payable only when resources of the bank permit तो एमान को मधुर को फीचर्स को कहा जाय छी जे एटा ओटे चेक हे परिबो दैट इट इज अ चेक ऑन अ बैंक दैट पेबल ओनली व्हेन द रिसोर्स ऑफ द बैंक जेतले बैंक परमिट करबो सेते बेले ही माने कोन चेकटा काम रे आस परिबो बोली बा पेबल हे परिबो बोली कहा जाय छी माने सो हम जदी फीचर्स मानो देखा डीपीएसपी हो फंडामेंटल ड्यूटीज हो फंडामेंटल राइट्स हो सो कोड है जीवो करेक्ट आंसर ताले कोन जो डीपीएसपी जो वेरी गुड डीपीएसपी इज अ करेक्ट आंसर है जीवो ठीक अछि the major reads as enshrined in the constitutions of India major reads कौन कौन habeas corpus mandamus prohibition certiorari and quo warranto habeas corpus and mandamus certiorari and quo warranto habeas corpus mandamus and prohibitions major reads कौन कौन एगुरा सब हे जीव ताले पांचटा जाक राइट habeas corpus mandamus prohibitions certiorari और quo warranto so पांचटा जाक हे जीव करेक्ट आंसर the lengthiest constitutions of the world रो सबुठारु लेंदी वाला constitutions काहर बा बहुत बड़ इंडिया आयरलैंड ऑस्ट्रेलिया एंड जापान काहर तले हे जीव इंडिया रो वेरी गुड इंडिया रो constitution ता होजी कोन सबुठारु lengthiest written constitution ओके ठीक अछि सो 50 क्वेश्चंस हमर कोन हला कवर हला ठीक अछि नेक्स्ट हमें काली देखियो ओके ठीक अछि सो थैंक यू गाइस थैंक यू फॉर बीइंग द क्लास जो माने लाइक करना लाइक गोटे करके जो एंड तास जो माने जदि नुवा जॉइन करछ क्लास रे से चैनल को सब्सक्राइब करि नबो ठीक अछि ओके चलो थैंक यू